Use or select? Use. So it's done, right? Again, public came. Yeah. I don't know why it's public is coming. Wait. For me, it's coming or not? Yeah, it will come. No issue. Leave it. कमिंग संतोष मेरे में भी पब्लिक ही हाँ दिखता हाँ है ठीक मतलब है ठीक है. It's okay. Okay. Sorry. It's my bad. On leave it. क्या है पुट कमांड रन करना फिर से? वो पुट कमांड दिखाना मुझे. This one you shared. Okay. Sorry, Okay. this one you shared हाँ. Now, yesterday. no. Not today. I said once again. Go to the chat box. Okay. Hmm. This one you shared. हाँ. Okay, this one I have created. What you need to do means you take the means your file means location from C to till stage. C to till stage. Okay. Take it here only means don't go means I also wanted to see. So it would easy. Open this once open this data Excel file. Yeah, fine. Close it. Should I delete that one if it's needed? No, not required. Hmm. So this one till stage I need Yeah, to the paste it, only right? yes, correct. Hmm. Now copy it. Now run it. Backspace. This one you do. Remove this and right click. Enter it. Now it's fine. Yeah, now it's uploaded. Because there might be a silly mistake is there. That's why. Now leave it here only. What next we need to do, guys? Means what we have used in once we have created a means database. Once we have created the kept the data into the folder, right? Like stages. Then what next we have done in last time for the named internal user internal stage. What we have done? Remember? Tell. We have to copy the data, right? यस यस Hmm. कॉपी इनटू दैट टेबल Okay. So copy into. So now I'm sharing my screen, and you guys need to perform the same. Hope my screen is visible to you. All right. यस So now we'll see there is a no data in MyDB. Okay. And what we need to do, we have to we have to copy the data, copy the data from table stage to table. Okay. So what I'm going to copy into MyDB public customer data table. From where we need to take the data? From
So at the rate or percentage is a symbol of table table internal stage, and I have given the table internal stage because table internal stage is nothing but name of table itself only. Okay, and the data might and what data we have kept, customer data, customer underscore data dot csv. We have the data file name is the this one. Might be that file name might be different, but the table name and this must be same. You got my point? Table name and the stage name must be same. This might be different, right? Any data we can take it here, but this not going to be changed, right? Because table name and the stage name, because table name is a itself only means the stage name of table stage, internal stage. Got it? Now file format type equal to CSV and field delimiter is comma separated and skip pipe header. Why we're skipping header? Because we have already created the column here. If you see the data, right? If you see the data, so in interview, for some interview they used to ask why we are means skipping. You have written skip header equal to 1. If we'll take it to, what is going to happen, right? They are asking in interview real time. So c underscore cust key, underscore name, and c underscore 3 columns we have, because we have already provided the header here. Okay, now coming to here this side, if we'll see, this is our data, right? So if if we'll see there, right? If you'll see the cost key equal to this much and this much, right? Suppose, right? Now suppose what is going to happen? This one skip header equal to -1 means I have my equal to 1. So this row is not going to be loaded. Only the data is going to be loaded because we have already created a row here, right? Got point, everyone? यस यस, अगर हम लोग मतलब स्किप नहीं करेंगे तो वो ओवरराइट कर देगा, मतलब ऑलरेडी हेडर है हाँ, हमारा, correct, तो correct. देंगे तो ओवरराइट हो Yeah, जाएगा। okay, fine. Now I am running it. Hmm. Okay, 51 character, line 4. Okay, so this one become 51 character means line 4. Let me check the data. See, okay, this one might be more than that file size. That's why it's not loading. So I'm what I can do it now. Why it's zero file proceed? One minute.
Please. Okay, there is a data difference. That's why it's not loaded. As of now, I have done modification here, uh, and we can check the data. Okay, so you can also make the data changes because I have taken the data from C tree itself only. Now, so data is available right now. So all are okay. Yes, Santosh. But Okay. why that data we are not able to put here C means that we have already? C means if you see here the data, right, means I have taken data from customer, I think, right. Hmm. So now, Due to the data type, sorry, due to the data type, C means yeah, yeah, I given this one, right. Where C means we have created this one, right. Where hmm, create a table, sorry, not this one, this one, create or replace table mydb customer data, C customer key. I have taken number, right. Number number, equal to, right. they have taken 38, right, means I have taken this one, 32 are only wrong. Got it. Okay. So Yeah, okay. means we have to give a length to it. Means because some file are uh, there, means that is a, that made a issue. Now let's say, let's Hmm. try to do it, run again. Okay, right now I'm creating or replacing table again. So now there is no data. Okay, now, Slow now, data. okay, Yeah. now limit 5, I can do it. I got there. So okay, 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 since this one is under this one snowflake. Hmm. Okay, as of now I'm doing this Snowflake use करना पड़ेगा ना, database use करना पड़ेगा. one. Fine, as of now I have done this one. Okay, Hmm. now I got the data. Okay, now download CSV file. Hmm. Come here to download. Now what I will do, I will make it a customer, leave it, leave it this one only. Okay, and what I am going to do, I have taken Hmm. three column only. So I removed, there are eight
means column or 6 or 7, 8 column was there. I removed three Santosh, column. sharing your screen. Okay, okay. I'm telling. There was here there is a 8 column was there, right? So I removed three. I kept three only because I have created the table of three only, right? Got it? Yes, got it. Now I closed it. Okay. So now my table name is this one. Okay. Now what I can do is I have to put into the this one. So my file name is today's data, nothing else. So I can't take it this one. I can today's lab I can take it because there is space. Otherwise it will be error. So I can today's lab I can take it. Today lab I can take it. Will it correct only? So space फिर से आगे क्या? Okay. Hope sure here is a no space. Here is a space. There is a space. I'll remove it. Okay. Now what I will do? I will run this command here. Okay. And now see the power of table internal stage is that the capability of table user interface is to handle only one file. Okay. Even the name is means deleted. It just means name is one name is changed. The only one file it will hold, right? Be- Okay, like the new one, it will hold only. Like हाँ as we do the update हाँ create and replace. updated data will take it. It will replace the old data. But And in user stage can have a yeah multiple table. yes multiple Okay, table data stage file can have only one multiple table. multiple files because we Multiple yeah data files. data files. Okay. So see the difference means it's a very means a very niche concept, but you guys mean to understand it. It's a very rare. You will not means not going to learn anywhere means this thing, right? So that is the difference here. Okay. Now we have a data. Okay, and we'll see. I'm going to load this data into that file. Okay. Now what we can do? My data is name is what is name of today's lab CSP, right? So this is the table name. So only this one. So you got the concept here means that this name and this name should be same because stage name should be not going to change because it associated with the table itself only. Okay. Now if you run it, now see once the data is loading on the got it. Okay. See here what I have done made it. It's this one. यहाँ पे तो ये मतलब दो दो अलग अलग फाइल्स है ना, कस्टमर अंडरस्कोर टेबल और टूडेज लैब। तो वहां पे भी अलग सेम ही देना पड़ेगा ना, टूडेज लैब करके।
या कस्टमर अंडरस्कोर टेबल ही देना पड़ेगा? क्योंकि डेटा तो डिफरेंट डिफरेंट है ना दोनों फाइल में। हम्म। बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो हमारा। डिटेक्ट कर लेगा दोनों मतलब डिफरेंट फाइल का, अगर हम लोग ऐसे कॉपी वाला सिंटैक्स देंगे कि अ, क्योंकि हम फाइल नेम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, मतलब लोड करते हुए। रागनी, देयर इज ए हम्म, स्पेशल सिंबल हियर, राइट? यू विल सी हियर, राइट? हैश। हाँ हाँ। हाँ। आई थिंक ये अलाउड नहीं है क्या इसमें? अलाउ है, अलाउ है। इसका डेटा टेबल फिर डेटा टाइप में चेंज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। बट इसको लोड करने के लिए स्लैश एन स्किप डिलीमीटर स्किप। डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। See, actually, this concept is means we have to means this concept is coming. Yeah, data type अगर हम यहाँ पे string करें कि क्योंकि हाँ। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारा डिफरेंट टाइप्स का डेटा है अभी। ये टाइप जो है अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें तो ये लोड कर देगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो मैं कर दूंगा तो हो जाएगा, स्किप करके दूंगा, स्लैश एन कर दूंगा। देखो स्लैश एन के कारण यहाँ इशू हो जाएगा, ठीक है। If I will do is slash n means expecting delimiter as cap means slash n, okay, while field delimiter -1 and the यहाँ पे and found expecting record delimiter -n, this one. So these two things we have to perform, but these two things I don't want to learn here because we have a separate means we have a huge means session is going to happen on कॉपी फाइल ऑप्शन। कॉपी फाइल ऑप्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे डेटा को कैसे लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, अभी यहाँ पे नहीं करते हैं अभी, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगी। यहाँ पे हम स्लैश एंड करके लगा देंगे तो ये डेटा लोड कर लेगा, ठीक है। इसको हम फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे ये कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, इट विल वर्क, राइट। बट हम यहीं पे हम डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लेंगे ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप, इट विल हम्म। वर्क, ठीक है। अब वैरकर की जगह पे स्ट्रिंग ले लेंगे, इट विल डायरेक्टली वर्क। बट हम तुम लोग से अभी भटकाना नहीं चाह रहे, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा तो फिर माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अच्छा मतलब बैकअप जब हम लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये अल्फा वैल्यू ही लेता है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं लेता। अल्फा न्यूमेरिक लेता है। स्ट्रिंग ले लेगा लेकिन। हाँ। अच्छा। डेटा। अब हमने डेटा चेंज किया तो अभी हमको फिर से वो कमांड रन करनी पड़ेगी, ये वाली पुट फाइल वाली। हम्म। स्किप कर दिया क्यों? क्योंकि इसका भी अलग सेंटर अलग एक ये है, ठीक है। अभी के लिए अभी छोड़ो, उस डेटा को छोड़ो, अभी तक के लिए समझ में आया ना कि कैसे हम्म। लोड करना है। विल कम टू दैट बिकॉज वी हैव हाउ टू स्किप द फाइल, हाउ टू forcefully we have load of a dedicated session only, we have a multiple things to play with the data, how we are playing with the data, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ो, नहीं तो फिर मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरनल स्टेज है, अभी करेंगे या मतलब नेक्स्ट डे करेंगे? नेम्ड इंटरनल स्टेज। नेम्ड इंटरनल स्टेज। मैं तो ये फटाफट कॉपी वाला अभी अपन स्किप कर रहे हैं ना? नहीं, अभी तो लोड किया था ना मैं दूसरा फाइल का। अच्छा, तो ये जब आपने कॉपी किया, कॉपी इनटू कस्टमर डेटा टेबल फ्रॉम कस्टमर डेटा टेबल हम्म। एंड टूडेज लैब, तो ये इसमें क्या हो रहा है? मतलब डेटा कहाँ से उठा के कहाँ क्या कर रहा है वो? ये देखो, ये हमारा टारगेट लोकेशन है। तो टारगेट लोकेशन हमारा क्या है? ये सेम हुआ था कल भी, हम उस दिन भी किए थे सेम चीज, ठीक है। हाँ कॉपी हाँ इनटू याद है, ये टारगेट टेबल का नेम है। हाँ। फ्रोम टारगेट फ्रोम टेबल का फ्रोम नेम है। फ्रोम का नेम है, ठीक है। फ्रोम कहाँ से ले रहे हैं? हम स्टेट से ले रहे हैं। और फाइल क्या ले रहे हैं? ये फाइल ले रहे हैं, बस। एक मिनट, तो ये टूडेज लैब फाइल हमारे पास में अपने लोकल में है ना, इधर नहीं हाँ, है? स्टेज के अंदर है, स्टेज के अंदर। अभी अब लोकल में कहाँ रहा, हमारे स्टेज से लोड कर रहे हैं, हमने डेटा को स्टेज में अच्छा रखा, इसीलिए अच्छा। हाँ स्टेज हाँ। स्टेज स्लैश फाइल नेम।
हाँ, उसके बाद फाइल फॉर्मेट CSV है, फील्ड डिनोमिनेटर इतना है, स्किप हेडर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये रन करेंगे, हम ये कमांड भेज दे रहे हैं, यू कैन डू इट। और हाँ, अभी फटाक से 1 2 मिनट 3 मिनट 2 3 मिनट में हम देखेंगे उसका क्या नाम है, नेम्ड इंटरनल स्टेज, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। नेम्ड इंटरनल स्टेज हम देखेंगे। तो देखो नेम्ड इंटरनल स्टेज क्या है, ये मेनली यूज होता है, ये सबके, देयर इज नो बाउंडेशन हियर, किसी भी टेबल के अंदर किसी भी कोई भी फाइल अपलोड कर सकती हो, बट द डेटा टाइप मस्ट बी सिमिलर, राइट, कॉलम डेटा टाइप। तो हमने क्या किया, पहले पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उससे पहले हमें एक स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट हम्म, नेम्ड स्कीमा, तो मैंने क्या किया, क्रिएट स्कीमा इफ नॉट एग्जिस्ट। अब क्रिएट स्कीमा इफ नॉट एग्जिस्ट हमने क्या किया, हम रन कर दिए, ठीक है। स्टेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्टेटमेंट सक्सीड, ठीक है। अगर ऑलरेडी है तो यहाँ आके देखोगी, विल कम हियर, विल कम हियर, सी, you will able to see it, right, this one stage is created, one schema is created, that is internal stage, I have created it, हम्म, able to see। यस, सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्टेज है, और मैंने बनाया नेम इंटरनल स्टेज, क्या बनाया है, नेम इंटरनल स्टेज क्रिएट। नेम इंटरनल स्टेज सो क्रिएट और रिप्लेस MyDB internal स्टेज, stage and stage name. So this one you know means schema. This one is database. This is one table schema name, and this is the stage name, right? So I am creating a stage या now. Stage create हो गया। अब हम क्या करेंगे, same way we have to keep the data into the internal stage, right? So internal stage का syntax क्या है, load keep data मतलब रखने के लिए, यहाँ से अगर देखोगे तो हम पुट कमांड स्नोफ्लैक के यूआई में नहीं कर सकते, वी कांट डू इट, राइट। तो अगर सपोज करो हमको, हमारे पास इतने डेटा है, ठीक है, हम अगर टेस्ट डालें, टेस्ट के अंदर क्या डेटा रखा है मैंने देखा, टेस्ट के अंदर, हम पुट कमांड नहीं कर सकते, लेकिन हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं डेटा को, राइट। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमने यहाँ से ले लिया, और हम यहाँ से सेम सारा चीज़ स्टेप सेम होगा, और यहाँ तक हम रिप्लेस कर दिए, ठीक है, स्टेज तक के लिए रिप्लेस कर दिए। नाउ what is a means CSV file name I am going to upload, that is a test, okay। and हमारा इसके बाद at the rate of mydb dot internal stage, this is name internal stage, हमारा स्कीम यह ये स्कीमा नेम है, at the rate mydb के अंदर है। इसके बाद क्या है, internal stage schema name, and then what next, next is a named internal stage, got it। so see the difference, I'm telling you the see the difference, how we have kept the data here, this is the यूजर इंटरनल स्टेज में डेटा कैसे रखे थे, और दिस इज द, ओके, या यूजर टेबल, नाउ सी द डिफरेंस हियर, ओके। सो यूजर टेबल एंड नेम्ड इंटरनल स्टेज, sorry this one is a table, right, no named internal stage, okay। टेबल का अलग है, सॉरी माय बैड, दिस वन इज टेबल, दिस इज a stage, this is your user stage, this is the table stage, this is the named internal stage, got the difference, यस, okay। now
Named we don't use at the rate and all, right? Yes, yes. No, named means we are using, right? Symbol is there, right? There is No, difference between the Yeah. symbol. symbol. So, After like we don't use percentage like that. Percentage another symbol. percent, because that is a Name. difference only. Named internal stage, if you'll see stage, external stage. So what we'll see the internal stage, there are three tabs. If you'll see the symbol, user internal stage, at the rate tilde symbol, then what is difference with table internal stage? Percentage means at the rate of percentage, and table named internal stage, this one. Okay. What is difference here? We don't need to forcefully create the stage name, right? Here we are creating the stage. You will see there. See, first we have created a schema, and keep the schema. We have created or replace stage. MyDB, enter this one. So in user internal stage and table internal stage, we have not created a schema. Sorry, a stage name. A stage from our side. Have you created stage? No, because it's automatically created by the Snowflake itself only. And the name is by default same. By default user, by default same for the table and the user. So so if you'll say stage is the name of, by default name of the user internal stage, and the table name same name of table is a means is a stage name of table user in table internal stage. But if it's a depend upon you how we are, what name you have to create it. So do we have you created a stage for the internal means name table internal stage or user internal stage? Have you created? No. No, right? So that is a question here. So once we are creating a user into the Snowflake, automatically user internal stage is created. Once you are creating a new table, any table, the table stage is created automatically. But here what we have to do, since we are working with the multiple people and multiple table, right? We are playing with the multiple table and multiple people in organization. So that purpose in both the cases in user is only limited to the user itself only. So they are no other people cannot go inside that user, other user cannot go inside that any user. And for the table internal state, table is limited to the table itself only. So multiple people can see the data of table user internal state, but cannot load the data to the multiple table. See means how we have loaded the data here, means here customer data and customer data both are same only. We can't load the another table. We can't load the data into the another table. But in user internal state, what is going to happen in user internal state, we can load the data. Suppose 1 minute. See what we can do means here customer data CSV, that is a user data, right? Here means we can load in any table order as well. Same means order as well, right? In user, this data we can load in other tables as well. But here what is going to happen, this data is going to be load for the this table only, not other table. Got my point or any doubt? मतलब फिर से बोलिए संतोष, मतलब देखिए यूजर टेबल में जो है सुनो कॉपी सुनो इनटू सुनो माइट सुनो बी सुनो, पब्लिक और मैंने कल दिखाया था, ठीक है? मैंने बोला था, यहाँ देखना थोड़ा सा बस। हम्म List stage, this is the symbol of user internal stage, right? Okay, if I'm running, you will see there are two files, हाँ ठीक है?
हाँ। तो इस फाइल को हम मल्टीपल टेबल्स में लोड कर सकते हैं। इस फाइल को किसी भी कॉलम में, मतलब ओके। एक भी डेटा रहेगा तो हम मल्टीपल टेबल में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ऑर्डर में कर सकते हैं, कस्टमर में कर सकते हैं, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि हम दूसरा कोई इस यूजर इंटरनल स्टेज को नहीं देख सकता है, अपने यूजर को ही देख सकता है। सपोज करो तुम्हारा हम्म। यूजर इंटरनल स्टेज अलग होगा, हमारा अलग हम्म। है, हमारे में क्या हम्म। है वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे को हम्म। विजिबिलिटी नहीं होता। और लेकिन हम्म। यहाँ पे हम एक फाइल को मल्टीपल टेबल्स में अपलोड कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। गॉट अच्छा। इट? एवरीवन हम्म। इज क्लियर, राइट? प्लीज गाइस नोट डाउन कर लो, मीन्स बहुत नीच कॉन्सेप्ट है, अगर लिखना है तो लिख लो, फिर अदरवाइज। एंड हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने मतलब हम यूट्यूब ये दिखाने के लिए, किसी को ये करने के लिए नहीं बनाया, बस तुम लोग को समझने के लिए बनाया कि मल्टीपल टाइम्स जाके उसको देखो। उसको देखने से क्या होगा, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसमें बहुत चीज छूटा छूट जाएगा जो उसको नोट डाउन कर सकती हो। ठीक है, और ये किसी भी टेक्नोलॉजी में होगा। अगर डेटा इंजीनियरिंग में काम करती हो तो किसी भी टेक्नोलॉजी में सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है हमारा, ठीक है। तो ये चीज हो हम्म। गया। नाउ this is the means table internal stage, right? Table internal। हम्म। सो यहाँ पे एक फाइल है, इस फाइल को सिर्फ हम एक ही टेबल में लोड कर सकते हैं। किस टेबल में कर सकते हैं? वो कस्टमर टेबल में कर सकते हैं। कस्टमर टेबल के अंदर ही कर सकते हैं, दूसरे टेबल में नहीं कर सकते। ऑल आर क्लियर? क्लियर, यस संतोष। राइट? रोहित, एनी सर डाउट? मतलब Yes, Santosh. Yes. या व्हाट यू आर टेलिंग अंकना? सर मतलब एक्सेस लेवल्स डिफाइन हो जाते हैं यूजर इंटरनल स्टेज में और टेबल इंटरनल स्टेज में। See, means yeah, access level is defined, but thing is that we are not going to able to load. We can able to load the one data, one file into multiple tables in user internal stage. But in table यस। internal stage, we have a only dedicated, just like a customer table we have created. We can load the file into the customer data table in itself only, not more than that. यस सर। Okay, now. मतलब एग्जाम्पल समझो कि जो टेबल स्टेज है ना। हाँ, अब मेरा टेबल स्टेज है, मैंने वहां पे एक टेबल बना मैंने लिया, सोच कस्टमर टेबल। सुनो, ठीक कस्टमर है। आप छोड़ दो, तो कस्टमर को छोड़ दो, मैंने स्टूडेंट टेबल बनाया है। हाँ ठीक है, स्टूडेंट टेबल बनाया। अब हाँ ठीक है। स्टूडेंट का इंटरनल स्टेज स्टूडेंट ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके नाम से जो नाम टेबल का है वही नाम उसका स्टेज का होगा। ठीक है, यस। हाँ ठीक है। ओके। हाँ जो नाम टेबल का है ओके। वही उसका मीन्स इंटरनल स्टेज का के नाम होगा। स्टेज का नाम ना होगा होगा। तो हाँ उसमें जो उस स्टेज में जो फाइल रखेंगे, उस डेटा को हाँ सिर्फ स्टूडेंट के टेबल में ही लोड कर सकते हैं, इतना समझ लो, और किसी में नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। स्टूडेंट के टेबल में ही लोड कर सकते हैं, मतलब कि ये ऑलरेडी मेरे स्टेज में टेबल है, ठीक है। अब मेरे को इसको कहीं और लोड करना है, तो तो नहीं मैं होगा। स्टूडेंट में ही लोड कर सकती हूँ। लाइक सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी मैं उधर लोड कर पाऊंगी। दूसरे जगह नहीं कर सकते, सिर्फ स्टूडेंट में ही कर सकते हैं उस फाइल को, और कहीं नहीं। मतलब देखो, अगर हमारे पास में ऑलरेडी टेबल है ना, तो हाँ, फिर हम उसको कहीं और लोड क्यों करेंगे? नहीं मतलब या एक फिर हम बोला, उसको कहीं और नहीं से लोड होता है करना ना है? कि ना मेरे पास ये फाइल है, हम मल्टी दूसरी जगह हमको भी लोड करना है इस फाइल को, तो हम टेबल इंटरनल स्टेज में लोड नहीं करेंगे, फाइल को रखेंगे नहीं। यूजर इंटरनल स्टेज नहीं, वहां भी नहीं करेंगे। रखेंगे। फिर वी हैव अ नेक्स्ट डेडिकेशन मींस नेम्ड लिमिट। टेबल में हाँ, रखेंगे ना, नेम्ड इंटरनल स्टेज के अंदर रखेंगे। ठीक ताकि है, सबको विजिबिलिटी मिले। मतलब आपने क्रिएट किया है, आपने शेयर किया है, उसमें तो नेम गाइज टेबल में। मीन्स नेम्ड इंटरनल स्टेज का मैं सिंटैक्स अभी भेज दे रहा हूँ, तुम जाके क्रिएट करना। हम्म ठीक है, यू कैन गाइज हम्म गाइज कैन गो एंड प्ले मीन्स सेम वे वी हैव टू डू इट, सेम वे व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ स्कीमा, राइट? हाँ। ठीक है, and then we have to create हम्म a stage। Okay, then we have to हाँ। हाँ। create a stage, internal stage name, then we have to create a stage। ठीक है, स्टेप नंबर वन, स्टेप सॉरी, 1 minute 1 minute, स्टेप नंबर, स्टेप वन,
Got it? Step 2 to next what we need to do, I'm writing here. Step 3, load file in named stage. Okay, so for that what we have to do, so you can choose any name, but for my purpose I have given it this one. Okay, next, copy data into table from named internal stage. सो गाइज तुम लोग, मैं अगर मैं नहीं करता हूँ तो तुम लोग ऐसे करके स्टेपिंग किया करो, मतलब अच्छा रहेगा इंटरव्यू से, ठीक है। नाउ व्हाट इज सिंटैक्स, सिंटैक्स इज सेम, सिंटैक्स, तो ये सब फॉर्मेट है। अब यहाँ कहाँ रखा था, ठीक है, एंड please keep the data very simple. Okay, means normal data, means we are going to play with the next, और ठीक है। ये नेक्स्ट, सारे कमांड इसमें ही करना है अपने को यूआई पे, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे ये करना है? कमांड होगा क्या यूआई पे, ये नहीं होगा। यूआई पे पुट तो नहीं वाला होगा, नहीं होगा, दूसरा सब होगा, तो बेटर कॉपी है तो हो कमांड जाएगा। प्रॉम्प्ट से ही हाँ, कॉपी तो हो जाएगा। सर टेबल इंटरनल स्टेज को सबसेट बोल सकते हैं क्या यूजर इंटरनल स्टेज का? नो, both are the same, difference. Yes, subset means it's I will tell you, I mean, difference tomorrow in better way. But see, means you got the, means how to play with the named internal stage, how to play all internal stage, right, with the basic data, everyone. यस। Okay, so if you not, I will upload both the yesterday and day before yesterday and today's means a video, you in your YouTube, after till afternoon 2 o'clock. You go and have a look, and you can work around this. And these are the steps I have mentioned for the name internal state. Go and spend some time around on this to load it. Ankana, you can skip as of now because you have you mentioned, right, you have a means semester exam also in final. You can, if you have time, then it will be, you can spend. Otherwise, you can learn itself here itself only. No. यस सर। Okay, fine. ओके गाइज, मीन्स हो गया लगभग, अब कल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके, बाय। अब वन मोर थिंग गाइज, कुछ होगा तो तुम लोग अपना पेमेंट कर देना, कुछ भी बेसिक इनिशियली, ठीक है, बिकॉज चलेगा। हाँ है ना, बिकॉज हमको भी थोड़ा सा फील अच्छा लगेगा और तुम लोग को भी लगेगा थोड़ा डेडिकेशन की मैंने भी कुछ पे किया है, तो ठीक है, ठीक है। ओके।